Good morning, dear students. Today we will discuss fourth part of chapter number 6, that is fractions. Part 1 and part 2, part 3 we have already discussed. So, for this part, our today's topic will be subtraction of unlike fractions. Addition of unlike fractions and addition of mixed fractions we have already discussed in part 3. So to continue this video, we will subtract two unlike fractions and in the next we will discuss about how we can subtract two mixed fractions. So suppose question is asking in your exam or given in your textbook like this, find the difference 1/2 and 3/7. इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है मीन्स 1/2 में से आपको 3/7 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. एंड क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर सेकंड विल बी लाइक दिस. यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ 6/11 एंड 3/22. सो हाउ कैन वी find the difference? At first we will make the given fractions into like fractions. ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, इनको सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे. जैसा ऐड हम करते थे तो क्या करते थे, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे. उसके बाद क्या करते थे, वहाँ पे आपको प्लस करना था तो हम क्या करते थे, ऐड कर देते थे. यहाँ पे आपको क्या करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. बट मेथड इज सेम. सो हाउ कैन यू मेक दीज फ्रैक्शंस इन टू लाइक फ्रैक्शंस? एट फर्स्ट we will take LCM of their denominators. So take LCM of denominators. Denominators is here 2 and 7. At first we will divide by 2. This will be 1 and here will be 7. Now 7 can divide this. 1 will be remain same and here will be 1. So what will be the LCM? LCM of 2 and 7 is equal to 2 into 7 is equal to 14. So ये आपका क्या हो गया, LCM हो गया. Now we will make the denominators equal to the LCM. To make the or to convert the unlike fraction into like fraction, at first we will make the given denominators is equal to the LCM of their denominators. So how we can make 2 is equal to 14? 2 को 14 हम कैसे बनाएंगे, इसमें आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So we have to multiply in both numerator and denominators by 7. 2 7s are 14. इसका डिनोमिनेटर्स क्या हो जाएगा, इसके एलसीएम के इक्वल हो गया ना 14. नाउ हियर वी विल डू सेम. व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय 2 into 7, this will be is equal to 14. So we have to multiply by 2 now in this numerator also. In next step we will write their product. This will be 1 7s are 7 and here 14. Minus sign is here, so this will be as it is. 3 2s are 6 and 7 2s are 14. Now we can subtract their numerators. Why? Because denominators are same. So we can now this is converted in like fraction. ये like fraction में convert हो चुका है. So we will write or subtract like this. 7 में से 6 को हम क्या कर सकते हैं, easily subtract कर सकते हैं. Why? Because their denominators are same. So denominators can be written like this. When we subtract 7 में से 6 को आप माइनस करेंगे, 1 will be get
as a numerator and denominator will be equal to the LCM or 14. So the difference of 1/2 and 3/7 will be 1/14. ये आपका क्या हो गया, डिफरेंस हो गया. दिस विल बी योर फाइनल आंसर. सिमिलरली वी कैन डू हियर. At first we will make their denominators is equal to LCM. So we will take LCM of 11 and 22. At first we will divide 22 by 2 because 2 is the first prime number. Here 11 is not divisible by 2 and 22 is divisible by 2 by 11 time. Now we can only 11 can divide this number by one time. And here also one time. So the LCM, here we can write LCM of 11 and 22 is equal to 2 into 11 is equal to 22. 22 तो LCM हो गया. अब क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर्स को 22 के इक्वल करना है. तो आपको फाइंड करना पड़ेगा किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें. सपोज यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 22 की इक्वल हो जाएगा. सो इन नेक्स्ट स्टेप वी कैन डू 6 into 2 and 11 into 2. Why? To make the denominators is equal to their LCM. यहाँ तो आपको ऑलरेडी 22 के इक्वल है, LCM के इक्वल है. सो दिस कैन बी रिटन 3/22. Now we will write the product of numerator and denominator. This will be 12 and here will be 22 minus 3/22. Now we can easily subtract 3 from 12. Why? Because their denominators are same. To subtract the fractions, method is saying that their denominators will be same. So 12 minus 3/22 can be written 9/22. This will be your final answer as difference. So the difference of 6/11 and 3/22 will be 9/22 will be your final answer. Our next topic is subtraction of unlike mixed fraction. इस बार आपको क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस जो कि कैसे हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करना है. सपोज क्वेश्चन इज आस्किंग लाइक दिस, सब्ट्रैक्ट 5 होल एंड 1/6 फ्रॉम 7 होल 2/3. ये कैसे फ्रैक्शंस हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन. व्हाई? बिकॉज दिस इज अ मिक्सचर ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन. Whole and proper fractions. So these fractions are known as mixed fraction and we want to subtract these fractions. So solution will be like this. किस में से किसको subtract करना है, 7 whole 2/3 में से 5 whole 1/6 को subtract करना है. So solution can be written like this. At first we will convert the mixed fraction into improper fraction. इसको आप क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में जो मिक्स फ्रैक्शंस हैं इसको और इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना हम ऑलरेडी क्या है पढ़ चुके हैं. सर कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके डिनोमिनेटर्स में होल में मल्टीप्लाई करते हैं, जो प्रोडक्ट आता है उसमें ऐड करते हैं न्यूमरेटर को, वो टोटल जो रिजल्टेंट होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर्स में क्या होते हैं, सेम डिनोमिनेटर्स प्रीवियस वाला ऐड करते हैं. सो 3 7s are 21 and 21 plus 2 23 and numerator will be same. So इसको हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया improper fraction में. improper fraction क्यों है, because here numerator is larger than denominator. So we will do same. 5 6 are 30 and plus 1 31 and numerator will be 6. So this fraction is converted into improper fraction. This will become 31/6. Now we will make this improper fraction into
लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में कब कन्वर्ट होगा? जब इसके डिनोमिनेटर्स क्या होंगे? सेम होंगे। डिनोमिनेटर्स सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 3 और 6 का क्या करना पड़ेगा? एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। सो एट फर्स्ट वी विल डिवाइड बाई 2, दिस विल बिकम 3. Now 3 can be divide this number and LCM will be 2 into 3 is equal to 6. LCM कितना आ गया? 6. अब ये 3 और इस 6 को क्या करना है? दोनों को 6 बनाना है। 3 को 6 बनाना है। सो हाउ यू कैन मेक दिस 3 6? वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 2. सो 2 से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स दोनों में हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 से। एंड ये तो आपका एलसीएम के ऑलरेडी इक्वल है इसका डिनोमिनेटर। सो इसमें आपको कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। दिस विल बी रिमेन सेम 31/6. व्हेन वी सॉल्व दिस विल बिकम 46/6 minus 31/6. Now this can be easily subtracted because their denominators are same, so the fractions is now here like fractions, so we can subtract 46 minus 31/6. When we subtract, this will become 5. 6 में से 1 को माइनस करेंगे 5 हो जाएगा, एंड 4 में से 3 को 1, and here will be 6. Here will be 6. Question is given in like fraction, mixed fraction, so your answer is also will be in mixed fraction. Here one thing is very important, that we can solve these fractions. We can convert the given fraction into simplest form. Why? Because ये कॉमन मल्टीपल्स कौन सा है? 3 कॉमन मल्टीपल दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स दोनों में है, तो 3 से हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं दोनों में। जैसे जो चेंजिंग हम उसके न्यूमरेटर में करेंगे वही डिनोमिनेटर में करेंगे, तो फ्रैक्शन में कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। सो 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं इसके न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर्स को भी। इस फ्रैक्शंस की रियल वैल्यू पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। When we divide 15 में आप 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये आपका हो जाएगा 5। यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप विल केम हियर। 15 में 3 से आप डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा। उसका न्यूमरेटर कितना हो जाएगा? 5। और 6 में जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर्स कितना हो जाएगा? 2। नाउ दिस फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड we have already learned about how we can convert improper fraction into mixed fraction. So इसमें 2 से आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। 2 2s are 4, 2 टाइम्स डिवाइड होगा, बट रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। रिमाइंडर को कहाँ राइट करते हैं? एज न्यूमरेटर। 2 को न्यूमरेटर आपका रहेगा ही, डिनोमिनेटर्स 2 को डिनोमिनेटर्स की तरह, और 5 को कितने टाइम डिवाइड कर रहा है? 2 टाइम। 2 2s are 4, और कितना इसमें ऐड कर दें कि वो 5 के इक्वल हो जाए? 1। 1 आपका क्या हो रहा है? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर को यहाँ राइट कर सकते हैं। दिस विल बी योर फाइनल आंसर एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो योर फाइनल डिफरेंस इज 2 whole and 1/2 when we subtract 5 whole 1/6 from 7 whole 2/3. So this will become 2 whole and 1/2.